Hi guys, welcome to another video. So in this video we are going to discuss about the entry question of investment banking. So first start with the first very typical question that generally asked in the investment banking interview. So walk me through the three financial statements. So this video will be in English. So let's start. So the three major financial statement are income statement, balance sheet, and cash flow. You all know about this. And the income statement gives the company's revenue and expense. This talks about the company's revenue and expenses and goes down to net income. We have the 100 crores of revenue and 70 crores of expenses, and apart from that we'll deduct all of them and there's a net income after that. So this is the final line on the statement. The balance sheet shows the company's asset in the resource, company's assets of the company balance sheets as aside as the company's assets such as cash, inventory, plant and machinery, etc. And liability shows the debt and account payables, shareholders equity, etc. So assets must equal to the liability plus shareholders equity, and the cash flow statement begins with the net income, adjust for the non-cash expenses and working capital changes, then list the cash flow from investing and financing activity, and then you see the company's net change. There's the asset side, liability side in the balance sheet. Apart from that, there's a cash flow statement as well that comes with the net income, and we adjust the non-cash expenses like the uh, depreciation, etc. And working capital changes those are changes in the your current assets. And after then we list the cash flow from the investing activity, how much money we have invested in each resources. And after that there's a financing activity. So and the and you see the net changes in the cash, like what is the net change in the cash the last year. Next one is, can you give the example of major line items the each of financial statement? Like income statement, first one is revenue, cost of goods sold, selling, general and administration expenses, operating income, pre-tax incomes, net incomes, etc. So these are basically income statement items. Apart from that, there's a balance sheet items as well. It's a cash, accounts receivables, inventory, plants, property and equipments, accounts payables, accrued expenses, debt, shareholders equity. Apart from that, there's a cash flow expenses as well. There's a net income, depreciation, amortization, stock-based compensations, change in the operating assets and liabilities, cash flow from the operations, capital expenditure, cash flow from the investing, sales and purchase of security, dividend issued, and the cash flow from the financing activity. So these are from the cash flow statements, etc. So next very typical questions is this, like how do the three statement link together? Like how do we link the three statements? So to tie a financial statement like net income from the uh, income statement flow into the shareholders equity on balance sheet into the top line of the cash flow statement. Like net income from the income statement is in the shareholders equity, like top line of the cash flow statement, like in the top net income from the income statement. After that there's a change in balance sheet items working capital changes on the cash flow statement and the investing and financing activity. So this is one. Let me explain you. Just so just we use the whiteboard for that. Just a minute, please. So let's start. Like how do is the statement link? Like income statement, balance sheet, and cash flow. तो ये लिंक कैसे हैं? We need to see that. Okay, so हम पहले देखेंगे. Let's say आपका income statement, balance sheet, and CF. So how these are linked? ठीक है. तो इनको बेसिकली कैसे देखा जाए कि कैसे ये सारी चीज़ें लिंक है. तो इनकम स्टेटमेंट में आपकी होती है यहाँ पे नेट इनकम, जो आपका नेट प्रॉफिट है, वो चीज़ आती है आपकी बैलेंस शीट में. बैलेंस शीट से सेम वही चीज़ जाती है आपकी कैश फ्लो में. ठीक है, एक चीज़ ये हो गई. इसी तरह चलिए यहाँ पे इसका काम हो गया. एक एक चीज़ और है यहाँ पे, डेप्रिसिएशन है. डेप्रिसिएशन यहाँ पे ऐड ऑन होता है ऊपर आके, नॉन कैश एक्सपेंसेस,
इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है नीचे, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग में जाते हैं यहाँ से। इसी तरह यहाँ पे बैलेंस शीट से कैसी चीज़ें होंगी आपकी, और ये दोनों कैसे लिंक है। डेप्रिसिएशन आपका एसेट्स पे लगता है, इंटरेस्ट आपका लोन्स पे लगता है, ठीक है। ये आपका बेसिकली यहाँ पे लिंक हो रहा है दोनों। अब ये बैलेंस शीट और कैश फ्लो कैसे लिंक है, यहाँ से जितने भी आपके एसेट्स हैं वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में जाएंगे। जितना भी पैसा आपने घटाया बढ़ाया है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस हैं, करंट एसेट्स हैं, यहाँ पे जाएंगे सारे। बेसिकली आपने चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो आता है। बैलेंस शीट से फिर आपके लोन्स होंगे, जितने भी लोन्स पे आप फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में डालो, कितना पैसा आपने लिया है, क्या इंटरेस्ट एक्सपेंसेस है, एक्सेट्रा। उसके अलावा आप जितने भी बेसिकली यहाँ पे कैश फ्लो आइटम्स हैं, लेट्स से आपने ओपनिंग कैश फ्लो यहाँ पे डालोगे चेंजेस देखने के लिए ओवर द ईयर, और वो आपके क्लोजिंग कैश के अकॉर्डिंग आ रहा है या नहीं। तो ये चीज़ें बेसिकली इनको लिंक करती है आपस में सारों को। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, लेट्स से इफ आई वर स्टैंडर्ड एट ऑन द डेजर्ट आइलैंड, only had I have one statement and I wanted to review the overall health of company. So which statement should I use? तो बेसिकली मैं एक रेगिस्तान में खड़ा हूँ और मेरे को एक कंपनी को एनालाइज करना है, मेरे को खाली एक ही स्टेटमेंट का ऑप्शन है कि आप एक ही चीज़ ले सकते हो। तो मैं क्या देखूँ, बताइए आप क्या देखें। रियल कैश फ्लो देखने के लिए मेरे को क्या चीज़ देखनी पड़ेगी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कि भाई तुम्हारे पास पैसा कितना है। एक्रूअल बेसिस पे चीज़ें तो आपके पास पड़ी होती। लेट्स से किसी ने मेरे को ऑर्डर दिया और उसका पेमेंट आएगा 10 साल के बाद, लेकिन एक्यूरेट बेसिस हो, लेकिन मैं आज के टाइम पे कितना कैश यूज़ कर रहा हूँ, कंपनी की लिक्विडिटी कितनी है, तो वो चीज़ मैटर करती है। So you would use the cash flow statement because it give a true picture of how much cash the company is actually generating, independent of all the non-cash expenses you might have. And that's the one thing you care about analyzing the overall financial health of company. So this is true. Like आपको चीज़ें देखनी पड़ेंगी कि आपके पास कैश कितना पड़ा हुआ है एक चीज़ को देखने के लिए। तो जितना कैश होगा उतना आपके लिए बेटर रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं हम आगे को।